Hello everyone, welcome back to the course Database Management System. In last module of Database System Concept Part 1.1, we focus on data, database, DBMS, disadvantages of file processing system, advantages of DBMS over file processing system, and applications of DBMS. Let's revise it. What do you mean by data? Data is an information about a particular entity. Entity means any real world thing. Entity has number of properties. These properties are represented as attributes of that particular entity. For example, let's take the example of student entity. Student entity has various properties like roll number, name, address, phone number, age, etc. If we collectively store this information into the table like structure, this forms a complete database. Now we can say database is a collection of interrelated data which store in the form of tables like collection of in the form of rows and columns. Now what do you mean by DBMS? DBMS is a collection of interrelated data and set of programs to access those data. That is, DBMS is equals to database plus set of programs to access this data. DBMS provides us an effective and efficient way to access this data. Now, what are the disadvantages of file processing system? We cover data redundancy. What do you mean by data redundancy? Data redundancy means duplication of data. Then we cover data inconsistency. What do you mean by data inconsistency? Inconsistency means mismatching of data. Then we were seeing difficulty in accessing data. Then data isolation, data integrity, atomicity problem, concurrent access problems, security problems, etc. These disadvantages were removed by using database management system. What are the advantages of DBMS over file processing system? DBMS provides us the advantages of independence of data and program, controlling redundancy, data sharing is effectively handled by DBMS, data integrity, centralized control, data consistency, data concurrency, and data security are improved using DBMS. Then we were seeing applications of DBMS. There are various applications of DBMS like banking system, airline system, universities, credit and transaction, telecommunication, finance system, sales management system, manufacturing, human resource management, web-based services, e-commerce, education, etc. Lots of applications of DBMS where database is used. Now in this module we will focus on database system concept part 1.2 and 1.3, that is data abstraction, instances, schemas, data independence. Okay, now what do you mean by three-level architecture of database management system? The architecture of a DBMS refers to the design of major components of the system and how they are related to each other. The main three components of the three schema architecture describe three levels of abstraction within the database system, namely external, conceptual, and physical, that is internal. The three levels within the database architecture represent different views of data. When a user requests data by writing database query, they use structures contained in their view of the database. The user's request must be converted from one of the external views to the conceptual view of the database and then internal view of the database.
The process of expressing one level in terms of another is called mapping. The mapping converts the contents of one level into the another. For example, mapping between conceptual and external view converts the contents of conceptual view into one or more external views like view 1, view 2, view 3 and up to view n. When a user requests data from database using external schema description, it is mapped to the conceptual schema and then to the internal schema. The main purpose of the three schema architecture is to separate each user's view of the database from other users. Users should be able to view the data in the form that best suits their needs. The same information may be viewed in more than one way. Users are not concerned with how the database has been physically implemented, but instead are interested only the contents of database. The external schema is also hides rest of database from the user group. In the external view, a user will only see entities, relationships and attributes that are of particular interest to them. The conceptual schema is a description of what is in the database. The conceptual schema describes the content of whole database. Its purpose is to hide details of how database is being implemented in particular database system. The conceptual schema represents a high level view of database using entities, relationships and attributes. It will also describe the security and integrity constraints of whole database. Internal schema describes how database is implemented. Internal schema as describing the physical storage structure of database. The physical representation of database on the computer is known as internal schema. Internal schema will describe a set of operating files, index structures that are used to store the data. The purpose of internal schema is to allow database administrator to achieve the optimal implementation of database. For example, maximum query performance or the minimum storage space usage. The internal schema will describe mapping between database relations and files, the types of indexes used, the allocation of disk blocks to the database, the method of record placement for each relation and any data compression and encryption techniques to be used. What is data abstraction? There are different levels of data abstraction. The major purpose of database system is to provide user with abstract view of system. Data abstraction means hide something database stored at complex level is kept hidden from the users at three different levels. The architecture of DBMS is divided into three general levels as shown in figure: external view level, conceptual or logical level, internal or physical level. First level, external level. External level is also known as view level. The highest level of abstraction describes only part of entire database. External level concern with way individual users see the data. External level. It is a highest level of abstraction. It describes a part of database of a particular group users. It can have many different views of a database. For example, tellers in a bank get a view of customer accounts but not of payroll data. We will see data abstraction. Why we need data abstraction? Data abstraction is a hiding particular information, the complex information from the user. जब भी हम information
रिप्रेजेंट करना है तब हमें क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा जो है वो हाइड करना है। जस्ट टेक अ एग्जांपल, जब भी हम किसी ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है तो जस्ट यूज़र क्या करते हैं, वो जस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन। दे आर नॉट कंप्यूटर प्रोफेशनल। जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है उनको पता है कि उसके क्लिक करने के बाद क्या एक्टिविटीज़ होने वाले हैं। जस्ट लाइक सेव बटन पे क्लिक करने के बाद वो पर्टिकुलर इवेंट जनरेट होगा। वो जनरेट होने के बाद वो पर्टिकुलर डेटा जो भी हमने फॉर्म के अंदर भरा है वो सब डेटा एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होगा और फिर वो हार्ड डिस्क कंट्रोलर के पास जाएगा और फिर उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस अलोकेशन होगा और वो स्टोर होगा हार्ड डिस्क के अंदर। एक पर्टिकुलर ब्लॉक अलोकेट होने के बाद वहाँ पे वो स्टोर होगा। पर ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये जो रेगुलर यूजर्स है जो कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं है उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं रहती। उनको जस्ट वो पर्टिकुलर डेटा में इंटरेस्ट रहता है। उनको ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो पर्टिकुलर एक्शंस हो रहे हैं आफ्टर सबमिटिंग दैट बटन, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इसीलिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ फ्रॉम द यूज़र। तो ये जो 3 लेवल्स है लाइक एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल। तो इंटरनल लेवल में क्या होता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है ये हम हाइड करते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर यूज़र। कंसेप्चुअल व्यू में वो डेटा कैसे स्टोर होता है, वो कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है वो हम हाइड करते हैं, मतलब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड। एंड एक्सटर्नल व्यू वो जो है वो डायरेक्टली यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पार्ट में जनरेट होता है। इंटरनल लेवल में क्या होगा, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, मतलब जो भी डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाले हैं वो कैसे स्टोर होने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ arrays, in the form of structures, in the form of which memory block, how much memory space is required। ये सारे डिटेल्स जो है वो इंटरनल लेवल हाइड करती है। इन कंसेप्चुअल लेवल व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, तो व्हाट डेटा इज स्टोर मीन्स वो पर्टिकुलर यूज़र को कोई रिलेशनशिप नहीं है कि वो पर्टिकुलर जो भी फील्ड हमने इंफॉर्मेशन भरी है वो कौन से डेटा टाइप से है, कितने कैरेक्टर, कितने बाइट्स वो डेटा स्टोर करने वाला है, उसकी रिलेशनशिप क्या है, ये सब वो पर्टिकुलर यूज़र को ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कंसेप्चुअल लेवल में वो सारे डिटेल्स यूज़र से हाइड किए जाते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल व्यू में पार्ट ऑफ अ डेटाबेस एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट वो पर्टिकुलर व्यू जनरेट होता है। इसीलिए वो जो पर्टिकुलर डायग्राम है इसमें व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3 और व्यू 4 ऐसे अलग अलग व्यूज़ है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 एंड यूज़र 4 रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर इंटरनल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब जो भी डेटाबेस से एक्सेस होने वाला है, डेटाबेस कैसे स्टोर होने वाला है, ये सब हाइड किया जाता है। इन द लॉजिकल लेवल वो पर्टिकुलर डेटा कौन से टाइप में स्टोर होने वाला है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका कितने बाइट्स में स्टोर होने वाला है, ये सब हाइड किया जाता है। और व्यू लेवल हमें पार्ट ऑफ अ डेटाबेस रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया सबको? कंसेप्चुअल व्यू, conceptual level also known as logical level, the next higher level of data abstraction, describe what data is stored in the database and what relationship exists among those data. The logical level thus describes the entire database in the terms of small number of relatively simple structure. It is a next higher level of data abstraction. It describes what data is stored. It describes relationship among data, and it is a database administrator level. And last level is internal level. Internal level also known as physical level. The lowest level of abstraction describes how data are actually stored. The physical level describes
complex low level data structure in the detail. Internal level represent how data is stored. It is a lowest level of abstraction, and complex low level structures describes in detail. For example, let's say we are storing customer information in a customer table. At physical level, these records can be described as block of storage, bytes, gigabytes, terabytes, etc. in memory. These details are often hidden from the programmers. At the logical level, these records can be described as field and attributes along with their data types. Their relationship among each other can be logically implemented. The programmers generally work at this level because they are aware of such things about database system. At a view level, user just interact with the system with the help of GUI and enter the details at the screen. They are not aware of how data is stored and what data is stored. Such details are hidden from them. This is all about data abstraction. Now we will see instance and schema. Collection of information stored in the database at a particular moment, that is instance of time, is called an instance of a database. The overall design of a database is called as database schema. Database schema is a description of a database. Database schema includes description of database structure and constraints that should hold on the database. Consistency constraints means any rules we applied to the database. Okay, the database instance is the actual data stored in the database at a particular moment in time. Database instance is also called database state or occurrence. The database schema changes very infrequently. Database state changes every time the database is updated. The database schema is called intension, whereas state is called extension. In simple word, database schema is ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस. मीन्स जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो जो डिज़ाइन है उसको हम बोलेंगे डेटाबेस स्कीमा. और इंस्टेंस मतलब एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इफ डेटाबेस कंटेन्स 10 records and in the at the नेक्स्ट टाइम सपोज T1 टाइम पे वो पर्टिकुलर डेटाबेस में 10 records है तो वो हुआ T1 टाइम का इंस्टेंस. अगर T2 टाइम में उसमें और कुछ 5 रिकॉर्ड्स ऐड किए हमने तो उसका इंस्टेंस चेंज होगा. तो इसीलिए इंस्टेंस इज चेंजेबल एंड स्कीमा इज अ कांस्टेंट थिंग. The analogy to the concept of data types, variables and values in programming language, consider a structure customer. Here cust is a variable of type customer structure. The database schema corresponding to the programming language type definition. The variable of given type has a value at a given instance. The value of variable in programming language corresponds to a instance of database schema. मतलब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम स्कीमा बोल सकते हैं. और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जब भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे लाइक कस्टमर नेम, सोशल सिक्योरिटी, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर सिटी, वो इन्फॉर्मेशन जब भी हम ऐड करेंगे तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम बोलेंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको बोलेंगे हम इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस. Database system supports 3 database schemas. Physical schema, it is at the lowest level, and that is physical level schema. Then logical schema, it is the next or intermediate level, that is schema at the logical level. And sub schema, it is the highest level, that is view level, means view level schema is known as sub schema. Now we will see data independence. Data independence means the property to change overall logical and or physical structure of the data without changing the application program's view of the data.
That is, the views created for users does not have any change. The data independence can be defined as the ability of application program to change in storage structure and access strategies. Types of data independence at physical data independence and logical data independence. Now, what do you mean by physical data independence? Physical data independence is the ability to modify physical schema without causing application programs to be rewritten. मतलब हमें अगर फिजिकल स्कीमा चेंज करना है, फिजिकल स्कीमा चेंज करना है मतलब फिजिकल लेवल, मतलब हाउ डेटा इज स्टोर्ड, डेटा स्टोरेज की अगर हमें डेफिनेशन, डेटा स्टोरेज का अगर हमें फैसिलिटी चेंज करना है तो हमें डेटा इंडिपेंडेंस ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम फिजिकल लोकेशन उसका चेंज कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, हमें वो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं. दिस एबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय डेटा इंडिपेंडेंस. Modifications at the physical level are occasionally necessary to improve performance. It means we change physical storage or level without affecting the conceptual or external view of data. The new changes are absorbed by mapping techniques. In this, physical layout and organization of data may be changed without changing either the overall logical structure of data or the application programs. For example, we can add extra fields, that is new fields, to database without disturbing the old records. Say EMP table, we add address field at any time. Actually in C or in any programming language, if we do so, the program should also be changed, but in DBMS it is not required because of data independence facility. The change is automatically reflected in secondary storage device. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होगा, सपोज हमने पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया, लाइक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमने जब क्रिएट किया था तब हमने 4 एट्रीब्यूट्स लिए थे, लाइक रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. After that, we thought we have to add new attribute like marks and age. These 2 attributes we want to add in a old table. If we add these fields into the database, new fields into the old database, this data independence facility provide this facility to add न्यू एट्रीब्यूट्स टू द ओल्ड डेटाबेस. तब हमें कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर कोई भी डेफिनेशन नए से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ड्यू टू डेटा इंडिपेंडेंस. लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा विदाउट कॉजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बी रीरिटन. Modification at the logical level are necessary whenever a logical structure of database is altered. For example, when money market account are added to the banking system. In logical data independence, the overall logical structure of data may be changed without changing application program. This is hard to achieve because application programs are usually dependent on logical structure of the data. लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना डिफ़िकल्ट है बिकॉज उसमें रिलेशनशिप रिप्रेजेंट की जाती है. रिलेशनशिप रिप्रेजेंट जब भी होगी तब एप्लीकेशन प्रोग्राम को फिर से रीराइट करने के लिए कंडीशंस आ सकती है. इसीलिए लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना डिफ़िकल्ट है, पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, to achieve these attributes from different tables are considered and those attributes query is written. Here attribute name, table names are properly selected and written, otherwise result may not appear with the required format. The data independence is the advantageous in the database environment since it allows for changes at the level of database without affecting other levels. These changes are absorbed by mapping between the levels. This is all about data independence.
Now let's revise today's module. In today's module, we have seen three level of abstractions. Three level of abstraction. One is view level, logical level, and physical level. At the physical level, how data is stored. At conceptual level, what data is stored, and view level is represent part of a database. External level is the highest level. It describes part of a database. Conceptual level is the next highest level. It describes what data are stored and relationship among data. Internal level, that is how data is stored, and it is the lowest level of abstraction. Now what do you mean by instance and schema? Instance means collection of information stored in the database at a particular moment, and overall design of database is known as schema. And database independence provides us ability to modify schema without causing application programs to be rewritten. उसमें है फिजिकल और लॉजिकल. फिजिकल में फिजिकली हम कुछ नया डेटा ऐड कर सकते हैं ओल्ड डेटाबेस में, और लॉजिकल इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है ड्यू टू डेटा इंडिपेंडेंस. दिस इज ऑल अबाउट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, 3-level data architecture and data independence. In next module we will see overall structure of DBMS. Thank you.